now, I'm Sagarika Mitra, and we're going to keep our focus on the big story that's coming in from the state of Maharashtra. With just days to go for the crucial Maharashtra polls, a fresh controversy has hit the Congress party. The grand old party's own leader, Nitin Raut, has made a shocking claim against his own party. He has alleged that he was dropped as a minister by then Chief Minister, late Vilas Rao Deshmukh, because he greeted Deshmukh with a Jai Bhim slogan. Now, Raut also claimed that he was told not to say Jai Bhim to Vilas Rao Deshmukh as it was not appreciated. Now, the claim by Raut has now armed the Bharatiya Janata Party, citing the comment as proof of the Congress party's aversion to Dalits and Baba Saheb Ambedkar, I beg your pardon. The Saffron Party has once again alleged that if the MVA is elected, it will scrap the SC, ST and OBC quota to give to minorities. मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता यह है, कांग्रेस संविधान नहीं मानती, न उनके मन में संविधान है, न उनके मन में दलित है। वो केवल वोटिंग के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोटों से ज्यादा कुछ नहीं है। और उनको जय भीम बोलने में शर्म आती है। हमको तो गर्व है, हम जय भीम बोलते हैं, लेकिन उनको शर्म आती है। और नितिन राउत तो राष्ट्रीय उनके प्रमुख है, राष्ट्रीय नेता है। अगर उनको जय भीम बोलने के लिए निकालते होंगे तो मुझे लगता है इससे ऊंची मानसिकता कांग्रेस की दूसरी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से नितिन राउत का ये खुलासा आया है कि विलासराव देशमुख जी की सरकार से उन्हें मंत्रालय से हटाया गया क्योंकि उन्होंने विलासराव देशमुख जी को जय भीम बोला। अब बात ये बनती है कि कांग्रेस दलित विरोधी इतनी क्यों है। राहुल गांधी कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देंगे, नेहरू जी भी आरक्षण समाप्त करना चाहते थे। 80s to 90s के बीच में इंदिरा जी और राजीव जी ने मंडल का विरोध किया। राजीव गांधी ने कहा कि आरक्षण बुद्धों को मिलता है। अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया। 2004 से 14 के बीच में ओबीसी SC ST आरक्षण को कैसे वोट बैंक को देना है, ये पूरी साजिशें रची गई। कर्नाटका में तो वोट बैंक को दिया भी गया आरक्षण। और जिस प्रकार से लगातार दलित विरोधी सोच कांग्रेस पार्टी की रही है, उसके प्रमाण लगातार मिलते रहे हैं। Now, the Congress, on the other hand, has dismissed the charges, saying that the viewpoint of one individual does not define the party's ideology. देखिए, अगर गरीब की बात उठाना जातिवादी राजनीति है तो हम ये बार बार करेंगे। अगर इस देश के दलित, पिछड़ों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं की आवाज बनना जातिवादी राजनीति है तो हम ये अवश्य करेंगे। नितिन राउत जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारी पिछली सरकार में भी तो वो थे, कितने सीनियर मिनिस्टर थे, तो बहुत वरिष्ठ मिनिस्टर थे। उनके साथ नाइंसाफी का प्रश्न ही नहीं। उन्होंने पूरे देश में हमारे SC डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति विभाग जो है, वो उस कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, तो इसलिए उनसे नाइंसाफी का प्रश्न ही। सब फालतू बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और कांग्रेस की क्या विचारधारा है सारी दुनिया को पता है, चाहे दलितों के साथ उनका क्या सलूक रहा है या दलितों को किस तरह से आगे बढ़ाया है। अरे भाई, कांग्रेस ने तो जो दलित नेता थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको इस देश का संविधान बनाने का अधिकार दिया है, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। Now, here's the comment of the Congress leader that the BJP is latching on to. What impact will this have? Let's play out that reaction of Nitin Raut. की विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री म्हणून घोषित झाल्यानंतर त्यांनी मला बोलावलं आणि सांगितलं होतं की कॅबिनेटमध्ये तुमचं नाव आहे, तुम्ही तयारीला लागा। परंतु ज्या वेळेला शपथविधी होणार होता त्यावेळेला सांगण्यात आलं की यादीमधनं तुमचं नाव गाळण्यात आलेलं आहे। म्हणून मी 1.5 महिने काही मंत्रालयात गेलो नाही आणि त्यानंतर जेव्हा गेलो आणि एकनाथराव गायकवाड राज्यमंत्री झालेले होते, त्यांनी मला रस्त्यात पकडलं आणि माझा हात पकडून मला म्हटलं की नितीन भाऊ, की तुम्ही विलासराव देशमुखांना जे जोरामध्ये जय भीम म्हणता ना, ते जय भीम म्हणणं सोडून द्या, कारण त्याच्यामुळे तुमचं मंत्रिपद गेलं। Shahzad Poonawalla, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, is joining us tonight. Advocate Susiben Shah, Shiv Sena spokesperson. We have Dr. Nikul Patel of the Congress Party and Mohammad Tariq Khan of the Samajwadi Party. Opening this up with Dr. Nikul Patel. Dr. Nikul Patel, a clip of your own party leader, a senior leader at that, has gone viral.
Yes, your party has distanced itself, but now this is being used to cite the Congress party's history when it comes to its, what the BJP is calling the hypocrisy on Dalits or on backward classes. Now, what Nitin Raut has said, does this put your party in a spot at a time when your top leaders are championing the cause of caste census, when your top leaders are giving naras like Jitni Abadi Utna Haq, when your top leaders talk about Mohabbat Ki Dukan? So is there no Mohabbat for the slogan of Jai Bhim in the Congress's Mohabbat Ki Dukan? See, Nitin Raut ji, the respected member of Indian National Congress, and he got first elected as a member of Legislative Assembly in 1999. But I would like to throw some facts that in 1960, D. Sanjeev Vaiya, the first Dalit Chief Minister from Andhra Pradesh, was a member of Congress. And we have always given the due respect to all the people who are really potential, and they are given due respect and positions everywhere in the country during the administrative rule of Congress. Congress had given even the Baba Saheb Ambedkar a position of chairman for the drafting committee to withhold the interest of the larger section of the society which were really not finding its footing on the society. So I think nothing where the Congress ideology is reflected where it defects the Dalit or scheduled caste or scheduled tribe or anyone in the country. Congress has always tried to give we can say that bring them to the mainstream of the society. That is what I would like to convey here. Shehzad Poonawalla of the BJP has joined us on the debate. Shehzad, the Congress party saying historically we have celebrated and given their rightful due to top Dalit leaders of the country, and the BJP only runs propaganda against us. And you have always cited examples of how the Congress party has insulted Baba Saheb Ambedkar, and the Congress party, like you claim, wants to end reservations. Now, this is a claim of Nitin Raut. Do you think this is going to help your party in Maharashtra? First of all, Sagarika, it is not 1st April. To tell Mr. निकुंज पटेल इतना झूठ. अरे आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया. 1961 में चाचा नेहरू ने बोला आरक्षण समाप्त करो. इट इज गिवन सेकंड क्लास पीपल. 80s से 90s के बीच में इंदिरा जी ने मंडल का विरोध किया, राजीव जी ने मंडल का विरोध किया. कहा कि जो मंडल का आरक्षण है वो बुद्धुओं को मिलता है. 90s में राजीव गांधी ने खड़े होकर बोला गिव मुस्लिम आरक्षण, डोंट गिव मंडल के नाम पे ओबीसी आरक्षण. 2004 to 14 they wanted to grab the OBC, SC, ST give it to the Muslims. They did it in Ranganatha Committee Court, they did it in Karnataka. Now Rahul Gandhi has said that Nana Patole has repeated it. And now when you have a Pratyaksha Praman or evidence being of Nitin Raut ki Jai Bhim bola, to Mantralaya se bahar ho gaya, and after that you are saying that you are for Arakkad Ambedkar. Actually, I've said everything else. Sagarika, 2 questions and then I'll open the floor for others. AMU में SC ST आरक्षण की पैरवी कांग्रेस क्यों नहीं करती? AMU में SC ST आरक्षण खत्म किया. Second thing, Sagarika, in Jammu Kashmir, first time when did Valmiki Samaj get आरक्षण? When the 370 was put in the grave, and these people want 370 back. They have supported the resolution of Mia Omar Abdullah. They are talking about आरक्षण संविधान. मोहम्मद तारिक खान, आपके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस पार्टी. अब उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि जब जय भीम का नारा उन्होंने दिया तो कांग्रेस के जो लेट चीफ मिनिस्टर थे उनको उस बात से दिक्कत थी और उस वजह से उनको मंत्री पद तक नहीं मिला. आप तो पीडीए की बात करते हैं. 1 second, आई एम टॉकिंग टू योर अलायंस पार्टनर. मोहम्मद तारिक खान जी, आप तो पीडीए की बात करते हैं और आप तो चैंपियंस है दलित राइट्स के. कांग्रेस पार्टी से जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं आप उनको क्या कहेंगे? No, we don't welcome any type of move like lateral entry in which Dalit don't have any type of reservation. We disagree with the move of Supreme Court subclassification of Dalits, where Solicitor General supported those things that was subclassification of Dalits. Point number 2. Point number 3. I always say BJP don't respect Supreme Court and don't respect Constitution. Why? Just few days back, Supreme Court gave verdict on AMU. Now, what is the question about that? That's what you think. What Supreme Court said, read it out. And what Article 29 and 30 says, read it out, then say all these things. Where is reservation and Dalit and all this? In breakfast, people used to eat bread, tea, coffee. They used to eat Arakshan of the poor people of India, Dalit, Pichhada, Adivasi. कितने मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने? पूछिए.
10 साल से सरकार है, कहां बना दिया इन्होंने दलितों को मुख्यमंत्री? और कितना काम कर रहे हैं? जब संविधान बाबा साहब ने बनाया तो इन्होंने, आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा कि यह संविधान घटिया है, इसमें मनुस्मृति का कुछ भी नहीं है, यह संविधान, और बाबा साहब पे प्रवचन देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और कान बंद करके बैठ जाऊं जब ये प्रवचन देखते। बाबा साहब का दिल्ली में पुतला जलाने वाले, ये महिलाओं को अधिकार बराबर का बाबा साहब ने जब दिया, उनको प्रॉपर्टी में राइट दिया, तो बाबा साहब का दिल्ली में पुतला फूंकने वाले ये कि इसमें दलितों, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी कैसे दी जाती है? बहुत अच्छा बोले आप मोहम्मद तारिक खान, पर मेरा सवाल तो बहुत ही अलग था। मैंने तो आपसे ये पूछा कि जब कांग्रेस के खुद के नेता आके ये स्टेज पे कहते हैं, वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मैंने जय भीम बोला तो उस वजह से मुझे मंत्री पद नहीं मिला, मैंने जय भीम बोला तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और मुझे जय भीम उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बड़े जल्दी याद आ गया। मींस to yesterday it has happened and tomorrow he has disclosed all the things. Means way back thing has happened. Now we are just opening all these things कि ये हुआ था, ये हुआ था. We are connecting all those things. What is this? Tomorrow I stand up and say कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो everybody will start discussing on that. Simple point is that BJP is anti-Dalit, anti-backward. That's why they keep on searching for the idea like NFS, not suitable found. They try to create job without reservation, and I have n numbers of examples where BJP have tried to curb the rights of Dalit by the route of employment, generating employment, and in jobs they keep on doing these types of things where reservation. Mohammed Tarik Khan, the BJP will respond to you, but let me bring in Advocate Susiben Shah of the Shiv Sena. In the state of Maharashtra, there is a larger narrative that is playing out. That is Hindu plus his Hindutva pride versus what you are accusing the Congress party and the Mahavikas Aghadi of doing, that is appeasement. One, appeasing the Muslim community, and number two, your alliance has accused the Mahavikas Aghadi of trying to snatch away reservation from SC/STs so that it can give it to their vote bank. Do you think the comments that are being made by Congress leaders, which will this help you, or will this be a non-factor in Maharashtra? Advocate Susiben Shah, please unmute yourself. Good evening to all, and good evening to all my fellow panelists. I just want to say this, that we in Maharashtra, in Mahayuti, follow the constitution in the letter and spirit of the law. Because the constitution is alive and kicking in Maharashtra, we have a rickshawala who's become the chief minister, and in the same breath, a chaiwala has become the prime minister of India. We don't see caste, creed, community. We see merit in a person, which is not at all there in Mahavinash Aghadi. Now coming back to the point, it was the Modi Sarkar, the Modi government that celebrated and populated the Constitution Day of India. It was never, so far, never has been implemented. The Constitution that is now in force from Kashmir to Kanyakumari is only because of the Modi government. It is only because we have the resolve to ensure that the Constitution is respected all over India. Now, there is no two doubt that this Mahavinash Aghadi is anti-Dalit and anti-reservation. There cannot be two ways about it. दो मत हो ही नहीं सकती when they talk about reservation of Muslim. लेकिन मैं आपके शो में बता दूं, I would let it be heard very loud and clear that as far as the Mahayuti is concerned, no Muslim reservation will happen or no religious reservation will be given, because it's against the spirit of the constitution. It is not allowed in the constitution of India. So where is the question of giving any religious reservation? OBC reservation was also spearheaded and implemented by the NDA government. It is a celebrated thing. The Congress party always celebrated Indiraji being against OBC reservation, Rajiv Gandhi being against reservation. And we don't let's bring in Shehzad Poonawalla of the BJP. Shehzad, I'll come back to you, Advocate Susiben Shah. Shehzad, the Samajwadi Party, which is an alliance partner of the Congress party in the INDIA bloc, they are in the fray in Maharashtra. They are accusing you of being anti-Dalit, and that is something they've been saying always. But the numbers are suggesting something else.
Your ek hai to safe hai clarion call, unity message as you would like to call it, is because you have realized that in Maharashtra, the Dalit vote, when it comes to the Dalit vote, that consolidated behind the Mahavikas Aghadi in the recently concluded Lok Sabha polls. We're talking about the Mahars. And the three M's that matter the most in Maharashtra are, the Maratha vote, the Mahar vote, and also now the Muslim vote. Is that number why you are constantly, pushing this narrative that the Congress wants to snatch away reservations? सागरिका, एक है तो सेफ है is not a चुनाव का नारा, it is a समाज का नारा, it is a देश का नारा. अरे we are seeing what is happening in Bangladesh. They are seeing wherever the Hindu has not been united, what has happened to the Hindu. So this is much beyond the election. ये चुनाव का नहीं है, ये हमारे देश के चरित्र का नारा है. जैसे हिंदू घटेगा और कटेगा, वैसे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पे खतरा है. दूसरी बात, तारिक साहब ने अभी नितिन राउत के बारे में क्या बोला? ही इज कॉलिंग अ दलित पर्सन झूठा. एंड दिस तारिक साहब, मिस्टर रईस शेख, has demanded 10% Muslim reservation in his Muslim manifesto. Is it as per Ambedkar? This Tariq Saab's party had opposed reservation in promotion during 2012. Was that Dalit ke liye nyay? And thirdly, I want to ask, he said ki dekho, this is not found suitable, NFS. No, actually the formula is MAD, MAD. Muslim above Dalit. That's why I asked Tariq Saab only one question. Should there be ST/ST reservation in Jamia AMU? मुंह पर पट्टी बंध गई because MAD, Muslim above Dalit, and that is why they will snatch the reservation of Beam and they will give it to the meme. This is their real agenda. When it comes to reservations for Dalits, SCs, STs and OBCs in institutes like Jamia and AMU, the BJP is asking you, will you back it? Listen, verdict had been given by the Supreme Court. What I'm saying that you have full majority government in center. What are you doing? You're playing chess or what? Do all these things. Who is stopping you? You play all the time games. Muslim reservation. The same way you have been giving Muslim reservation in Andhra Pradesh. You are providing reservation to Muslim in Andhra Pradesh. How you are providing 4% reservation to Muslim in Andhra Pradesh? Now you are asking us. How hypocritical you are. You are asking us that how we are giving. आप 4% दे रहे हैं. मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह दे रहे हैं. उनके आंध्र प्रदेश में कब्रिस्तान बना रहे हैं. और यहाँ ये सब बातें कर रहे हैं भीम और मीम की. अरे भाई, आप स्टेट के हिसाब से चलेंगे क्या? आप आंध्र प्रदेश में कैसे दे रहे हैं रिजर्वेशन? आप दे रहे हैं, वहां तनख्वाह दी जा रही है. 1 लाख रुपए जो हज करने जा रहे हैं उनको दी जा रही है. आप ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को. एक फैसिलिटी दी जा रही है. अब ये तुष्टिकरण नहीं है, ये पता नहीं कौन सा करण है. ये भगवाकरण है या भाजपा करण है देश का, ये मुझे नहीं समझ में आता. मगर आप कैसे रिजर्वेशन दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात, आपकी केंद्र में सरकार है, आप कर क्या रहे हैं? आप बैठे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट का तो रिस्पेक्ट करिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर काटना है तो उसके ऊपर लोकसभा है, लेके आइए. आप चर्चा होगी ना. क्यों नहीं चर्चा करते हैं आप? और आर्टिकल 29 और 30 को 4-5 बार पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनेंगे. यही संविधान है. इसीलिए कहते हैं लाल डायरी लेके चलते हैं कि उसको पढ़ लिया करिए. दलित विरोधी चेहरा आपका खुला हुआ है. लाल डायरी कौन लेके चलता है? लाल डायरी कौन लेके चलता है तारिक खान जी? हम लोग संविधान की किताब इसीलिए लेके चलते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 पढ़ लीजिए. मैं नहीं, उसमें तो लिखा हुआ है. भी तो थे, कुछ ब्लैंक पेजेस भी तो दिए गए थे आपके अलायंस पार्टनर के इवेंट में. वो मैम कहीं से निकाल लिए गए होंगे, मगर कहां से निकाल लिए गए? किताब, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो मैम खाली नहीं हो सकती. अरे तो आपको ये भी तो पता होगा कि कर्नाटक में एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हाल ही में ये कहा कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर इस्लाम को अपनाना चाहते थे, और अगर वो होता तो वहां पे जितने नेता थे जिनका उन्होंने नाम लिया, वो कहते हैं कि हनुमंता जी का नाम होता. उन्होंने ये भी कहा कि जो वहां पे वरिष्ठ नेता है वो सब मुसलमान होते. ये तो उनके कमेंट्स है. बीजेपी कहती है आप तो बाबा साहेब अंबेडकर को लेके भी डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स रखते हैं लोगों के सामने. Mikul Patel, this is the allegation that the BJP levels on you. When you say that we are protecting the Samvidhan, we are fighting for the ideology of Dr. Bhimrao Ambedkar, they say then when such distorted comments are made, how do you defend that?
See, Dr. Bhimrao Ambedkar, when he was in his career, he found that there is definitely atrocities taking place along scheduled caste and scheduled tribe. And when he was given chance to become a chairman of the drafting committee of the constitution, he put some fundamental and constitutional rights to these people. Congress is the party I would like to say that had given the topmost constitutional position of chief minister. Did you I have honor given one Dr. example. Bhimrao I have Ambedkar's given one legacy? Let me finish. I have given one example of 1916. I would like to quote one more example of 1985, where Amar Singh Chaudhary, Adivasi, was being a chief minister of Gujarat. There are numerous cases where we have always given the due respect and due positions to all the people who belong to this. Now, when it comes to Dr. Bhimrao Ambedkar, he was a learned person, and if you say that if he have accepted Muslim thing, then it is all, I don't think seems good. He had accepted, I think, Buddhism, and he is a very intelligent and intellectual guy. Okay, very intelligent and intellectual guy. That is how you talk about Dr. Bhimrao Ambedkar. I'm completely running out of time here on the debate, but I'd like to thank all my panelists for joining us. Advocate Suziben Shah, apologize, couldn't come back to you for a second question, but hope to talk to you once again. Taking a short break here on Times Now, viewers. That's going to be the big story here on Times Now as we